हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपणकर क्लास रोचे आपणकर स्टाफ नर्स आ एएनएम पिला मानक पई ओडब्ल्यूसी एसआई जो माने एग्जाम आपण अप्लाई करछंती ता सहित आपणकर आरआरबी जो आपणको पोस्ट प्रिपरेशन होछंती तार आरआरबी रो आपणको मो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपणको बैच रे शेयर कर देछि ता सहित ओडब्ल्यूसी एएसआई रो एएनएम रो आ स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट एलटी पिला मानक पई अपडेट आसी कि ताकर 790 एप्लिकेशन जो रिजेक्शन होती किसी सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई कर तो ठीक से आप देखिए सब अप्लाई करूँ ओडब्ल्यूएस जेहतु अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन लिस्ट आपंकर आसे तो दुईथर आप रिजेक्शन लिस्ट आसी सारे तो ये आपंक आउ थे आप 790 एप्लिकेशन रिजेक्ट होता आउ प्रिपेरेसन जो मैंने बैच जॉइन करा चाहते तो ये नंबर आप मेसेज करेंगे 6372270928 तो ये नंबर आप मेसेज करके आप बैच जॉइन करेंगे फास्ट आउ सेकेंड बैच जेहतु आप चलती दुईटा बैच आपण मैंने जॉइन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करवा आज आपणकर एब्नॉर्मल चाइल्ड बर्थ रो टॉपिक रु आपणकर रहउची क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द टर्म फॉर ए प्रेगनेंसी दैट डेवलप आउटसाइड द यूटेरस एटी पचारची क्वेश्चन नंबर 1 रे तो करेक्ट आंसर आपण माने हे जो ऑप्शन नंबर ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहइबो। तो explanation देखो an ectopic pregnancy is the pregnancy that develops outside the uterus typically in the fallopian tube। क्वेश्चन नंबर आपणकर 2 आसिला which of the following is a complication of the breech presentation एटी पचारछि आपणक complication तार आर करेक्ट आंसर आपण मानक हे जो ऑप्शन नंबर बी umbilical cord prolapse जोटा कि आपण ऑप्शन नंबर बी आपणक करेक्ट आंसर रहइबो। Our explanation upon the breech presentation can increase the risk of umbilical cord prolapse where the umbilical cord slips out of the birth canal before the baby। Question number 3 देखंतु आपनकर what is the term for a condition where the placenta separate from the uterus before the childbirth एठी पचारछि करेक्ट आंसर हे जो आपनकर abruptio placenta जोटा कि ऑप्शन नंबर बी आपनकर करेक्ट आंसर रहइबो। Abruptio placenta is a condition where the placenta separates from the uterus before the childbirth, which can cause the bleeding and deprive the baby of oxygen। Question number 4. Which of the following is a risk factor for a cesarean section? एठी पचारछि कोटा आपण रिस्क फैक्टर ओ cesarean section है multiple pregnancy, breech presentation, placenta previa, all of the above। तो करेक्ट आंसर है जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव आपनक रिस्क फैक्टर रहउची जो सिजरियन सेक्शन रे ऑल ऑफ द एबव आपन करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखंतु मल्टीपल प्रेगनेंसी ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड प्लासेंटा प्रीविया ऑल रिस्क फैक्टर फॉर ए सिजरियन सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द टर्म फॉर ए कंडीशन वेयर द बेबी शोल्डर्स बिकम स्टक ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बिकम स्टक थाए जिते चाइल्ड बर्थ होते आप समय तो यहाँ करेक्ट आंसर आपण मानकर कौन है जो कौ कंडीशन शोल्डर डायस्टोकिया तापर फिटाल डिस्ट्रेस umbilical cord prolapse प्लासेंटा प्रीविया तो करेक्ट आंसर है जो आपन शोल्डर डायस्टोकिया जोटा ऑप्शन नंबर ए आपन करेक्ट आंसर रहिबो। एक्सप्लेनेशन द शोल्डर डायस्टोकिया इज ए कंडीशन वेयर द baby shoulder becomes stuck during the childbirth which can cause the injury to the baby and the mother। Question number 6 देखंतु which of the following is a complication of the prolonged labor एटी पचारछि complication पचारछि prolonged labor रो fetal distress maternal exhaustion increase risk of infection all of the above तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर all of the above। prolonged labor can cause the fetal distress maternal exhaustion and increase the risk of infection। Question number 7 देखंतु what is the term for a condition where the placenta grows too deeply into the uterus placenta previa placenta accreta तो abruptio placenta postpartum hemorrhage तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर placenta accreta ऑप्शन नंबर बी आपण करेक्ट आंसर रहइबो। Placenta accreta is the condition where the placenta grows too deeply into the uterus which can cause the bleeding and other complication। Question number 8 which of the following is a risk factor for a postpartum hemorrhage placenta previa abruptio placenta placenta accreta all of the above आपनकर करेक्ट आंसर रहइबो।
placenta previa absorption, placenta and placenta creta all are risk factor for a postpartum hemorrhage. Question number 9. What is the term for a condition where the baby heart rate becomes the abnormal during the childbirth? এটি পচারছি আপনাকে term for the condition কোউ condition baby ର heart কোন rate becomes abnormal ଥାଏ during the childbirth ସମୟରେ the fetal distress, fetal bradycardia, ଆପଣଙ୍କର fetal trachycardia ନା umbilical cord prolapse. correct answer is fetal distress, option number A ଆପଣଙ୍କର correct answer ରହିବ. Fetal distress is a condition where the baby heart rate becomes abnormal during the childbirth, which can be caused by the lack of oxygen or other complication. Question number 10. Which of the following is a complication of forceps delivery? Fetal trauma, maternal trauma, increase the risk of infection, all of the above. The correct answer is option number D, all of the above. Correct answer. Forceps delivery can cause fetal trauma, maternal trauma, and increase the risk of infection. जोटा कि explanation रहिबो. Question number 11. What is the term for a condition where the umbilical cord wraps around the baby's neck during the childbirth? Nuchal cord, umbilical cord prolapse, fetal distress, placenta previa. The correct answer is option number nuchal cord, option number A. Explanation. A nuchal cord is a condition where the umbilical cord wraps around the baby's neck during the childbirth, which can cause the compression of the cord and deprive the baby of oxygen. Question number 12. Which of the following is a risk of factor of the uterine rupture? Previous cesarean section, previous uterine surgery, multiple pregnancy, all of the above. The correct answer is option number D, all of the above. What is the term for a condition where the placenta partially completely covers the cervix during the pregnancy, or completely covers the cervix during the pregnancy? Placenta previa, placenta accreta, abruptio placenta, postpartum hemorrhage. এটা আপনার অপশন নম্বর এ আপনার correct answer হবে placenta previa. Explanation. The placenta previa is a condition where the placenta partially or completely covers the cervix during the pregnancy, which can cause the bleeding and other complication. Question number 14. Which of the following is a complication of a prolonged second stage of labor? Fetal distress, maternal exhaustion, increase the risk of infection, all of the above. The correct answer is option number D, all of the above. Prolonged second stage of the labor can cause the fetal distress, maternal exhaustion, and increase the risk of infection. Question number 15. What is the term for a condition where the baby head becomes stuck in the birth canal during the childbirth? Shoulder dystocia, and ଆପଣଙ୍କର fetal distress, umbilical cord prolapse, head entrapment. Correct answer is ଆପଣଙ୍କର head entrapment, जोटा कि option number D correct answer ରହିବ. Head entrapment is a condition where the baby head becomes stuck in the birth canal during the childbirth, which can cause the injury to the baby and the mother. Question number 16. Which of the following is a risk factor for the placenta absorption? जोटा कि आपनको risk factor पचारछि. Hypertension, trauma, multiple pregnancy, all of the above. So all of the above आपनको एटा correct answer ରହିବ, जोटा कि कोथि ना hypertension, trauma and multiple pregnancy are all risk factor for a placenta absorption, जोटा कि आपनको correct explanation ରହିବ. Question number 17. देखंतु, what is the term for a condition where the umbilical cord becomes compressed during the childbirth? Question number 17 पचारछि umbilical cord prolapse, fetal distress, option C umbilical cord compression, placenta previa. तो option number C आपन correct answer है umbilical cord compression, जोटा कि option number C आपन correct answer रहिबो. ये सब आपन नोट करिवे जो माने बैच रे जॉइन करनांती, जो माने बैच जॉइन करछन ऑलरेडी पीडीएफ तांको पाकर थी, तो जो माने जॉइन करनांती निश्चिंत आको नोट करने. Explanation देखो, umbilical cord compression is a condition where the umbilical cord becomes compressed during the childbirth, which can cause the deprivation of oxygen to the baby. Question number 18. Which of the following is a complication of a forceps delivery? Fetal trauma, maternal trauma, increase the risk of infection, all of the above. Question number D है जो अपना correct answer all of the above.
Forceps delivery can cause the fetal trauma, maternal trauma, and increase the risk of infection. Increase the risk of infection करते जोटा forceps delivery. Question number 19. What is the term for a condition where the placenta grows too deeply into the uterus and penetrates the uterine wall? The correct answer is जो अपना option number A, placenta accreta. जोटा कि option number A correct answer है. Placenta accreta is a condition where the placenta grows too deeply into the uterus and penetrates the uterine wall, which can cause the bleeding and other complication. Question number 20. Which of the following is a risk factor for the postpartum hemorrhage? Placenta previa, absorption placenta, ना आपन placenta accreta. तो all of the आपन correct answer रहिबो. Placenta previa, absorption placenta and placenta accreta all are the risk factor for the postpartum hemorrhage. तो एटा आपन 20 क्वेश्चन थला. एटा आपन abnormal child birth topic रू आपन जोटा कि आपन आगो को आपन OSSC एग्जाम रे हेल्पफुल होई पारे आपन मन पई कि. तो एटा इंपोर्टेंट रोचे. निश्चिंत जो मैंने बैच जॉइन कर निश्चिंत जॉइन करना कहीं आप बहुत कम प्राइस रे आपको सबकि जेहतु मिलूँ हाथ चढ़ा करतुनि जॉइन करने कि आप जहाँ भी पीडीएफ आप दरकार होची नहीं जातु. यहाँ आपण मन रोचे आबेठू आप प्रिपेरेसन कर जेबे भी आपंकर पोस्ट आसूची कि निश्चिंत एबेठू आप प्रिपेरेसन करवा निहाती दरकार. बहुत पिला किसी बहुत बुक नहीं गले पिला माने कहउछन को बुक भल को बुक खराब सेमिति किसी आपणकर नाही. बुक आपणकर गोटे गोटे आसी न थाए किंतु मल्टीपल बुक आपण पाखे थिबा निहाती दरकार. जेमति रहिला आपणकर ऑल नर्सिंग पिला मन पई कि टारगेट हाई बुक आपणकर पाखे थिबो समस्त पाखे से प्रिपरेशन करथबे. ता सहित पीआर यादव भी आपणकर प्रिपरेशन करथबे. को बुक आपण मन पई भल ये दुईटी बुक रे आपन अधिकांश क्वेश्चन देखा मिले. किंतु जिते बड़े आपणकर एएनएम रो बहुत दिन पर आपणकर एग्जाम हैला बहुत दिन पर आपणकर पाखापाखि 10 वर्ष पर आप एएनएम जो कंडक्ट हैला एग्जाम से गोटे पर्टिकुलर गाइड रू आपणकर आसीथिला जोटा कि आईकेआर बुक रू. किंतु एग्जामिनर माने प्रथम थर जो आप एग्जाम कंडक्ट करथिले ते जानि नथिले कि आपणकर क्वेश्चन रो केमिति कोन आपन लेवल कोन एएनएम रे केमिति कोन क्वेश्चन आसे तार किछि गोटे आइडिया नथिला. तो से पर्टिकुलर बुक को आपणकर आणिकी से क्वेश्चन तैयारी कले से क्वेश्चन जति आपणकर भूल रहिला से माने ग्रेस मार्क जो माने 37 पाइले तांको ग्रेस मार्क मिलगला. तो एमती आपण को आगु जदि एग्जाम हुए से पर्टिकुलर बुक आसी बोली कोनोसी माने नहीं आप. तो सेति पई बेस्ट बुक आपण मन पई टारगेट हाई पीआर यादव ए सब बुक रहइबो. आईकेआर जदि पाखे अछि रखंतु किंतु ताकू तादर को क्वेश्चन को सर्च करंतु देखंतु कि तादर आपन भूलभाल कोन रहउछि देखंतु ताक भूल ठीक ठाक करी पढंतु. भूलभाल आपन पढुथिबे तो आंसर भूलभाल ही आपन देबे. कारण मु जते बेले आपन आईकेआर बुक रू दउथली क्वेश्चन आपनकर ग्रुप रे सेतरे बहुत बार भूलभाल क्वेश्चन थिला. तो से बुक को रखंतु पढंतु किंतु देखि कि पढंतु चेक करंतु आंसर. तो एटा इंपोर्टेंट अपडेट रहउछि. गोटे गोटे बुक रे आपण आसुने किंतु मेन दुईटी बुक जोटा हम कहली नर्सिंग पिला मन पे जेटा प्रिपरेशन निहाती करिया दरकार. आउ फार्मासिस्ट पिला मन पे कहउछि फार्मासिस्ट किट जो माने पाकर थिबो तो भलो कथा प्रिपरेशन करथबे तांको पे. ता सहित आरआरबी रो फार्मासिस्ट बुक भी ऑलरेडी ग्रुप रे शेयर करछि. आपण एजुकेशनल जो सब ग्रुप अछि सेतेरे आपण को शेयर करछि. जो माने को इंटरेस्ट हो से मन नै परिबे क्या को फोर्स नहीं कि बाध्य नहीं जबार अच्छी अच्छी जब इंटरेस्ट अच्छी नियंतु किसी असुविधा नहीं. तो यहाँ इंपोर्टेंट टॉपिक थिला आपण एब्नॉर्मल चाइल्ड बर्थ को बुक रो आपण पढ़िबे मु आपण ऑलरेडी कहिदेली को बुक रो आपनकर एग्जाम रो आसीबार अछि जो भी आपनक नर्सिंग एग्जाम दियंतु. और रहिला प्रैक्टिस सेट रो भी आपण मानको मु क्वेश्चन दे दैछि ऑल ओवर इंडिया रे जो आपनकर प्रैक्टिस सेट अछि आपण जो बुक दौची से आप ऑल ओवर इंडिया सब प्रैक्टिस सेट अच्छे से ये दूची कि केतବେଳେ कौन आपण लेवल हाई लो रोचे केतବେଳେ आउटसाइड बाहर पड़ पड़ जाऊँ क्वेश्चन. तो से दृष्टि आपण मानक प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन अच्छे ताकू भी मुझे दे सारी पिला 18टा सेट चाहिए आज स्टाफ नर्स पिला 18टा सेट दे सारे आउ जहाँ अच्छी आपण सेयार करदेवी. तार सहित आरआरबी स्टाफ नर्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी
ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। 3-4ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ତ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କର। ତ ଏସବୁ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ଚାଲିଛି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେଇଟା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାଲିଛି ତ, ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲୁ। 1 ଇୟର୍ ତ ମୁଁ ରଖିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ତା ପାଇଁ, ଚାଲିବ ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।